In today's video, we are going to cover the remaining part of the DNA that some of it we discussed in the previous video as well. The subtopic that we are going to cover is the introduction, properties, explanation, and then there is a quiz for you guys in the end. Let's begin. So, if I give you a quick overview of your previous lecture about DNA, it is that the DNA is also known as the deoxyribose nucleic acid, right? It is a double helical structure, as you can see here in this picture, right? And then there is a rule that always the cytosine will pair with guanine and the adenine will always make its pair with the thymine. This is the sugar phosphate backbone that you can see right here. These are the nitrogenous bases and this is the base pair. The base pair 3 are similar as of the RNA, that is the ribose nucleic acid, and only one is different in the DNA and in the RNA. So in this table, you can see the relative amount of bases in DNA. The relative amount of bases in DNA from various organisms, right? From various organisms. इफ यू कैन सी अगर हम देखें मैन में ह्यूमन बीइंग इसमें जो एडेनिन है वो 30.9 प्रेजेंट है ग्वानिन 19.9 थायमिन 29.4 एंड साइटोसिन इज 19.8 शीप में अगर हम देखें तो जो एडेनिन का लेवल है 29.3 है ग्वानिन 21.4 है थायमिन 28.3 है और साइटोसिन 21.0 है अगर हम वीट में देखें it is present there as well, right? But the quantity of adenine is 27.3, guanine is 22.7, thymine 27.1 है, cytosine 22.8 है. yeast में अगर हम देखें तो adenine जो है वो 31.3% present है, ग्वानिन हमारे पास 18.7% है थायमीन 32.9% है और साइटोसिन 17.1 ओके सर दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेबल मोस्टली इससे एमसीक्यूज आते हैं सो यू गाइस नीड टू रिमेंबर मेमोराइज ऑल ऑफ दीज amount they do come in MCQs as well, right? So this is an important table, remember this. ओके अगर हम देखें तो सबसे पहले जो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन रॉसलिन फ्रैंकलिन थे दे यूज द टेक्निक ऑफ एक्सरे diffraction in order to determine this structure of DNA. At the same time, James D. Watson and Francis Crick, the two person, they built the scale model of DNA, the one that you are seeing right now on your screens. All the data thus obtained, it strongly suggested that DNA is made up of two polynucleotide chain or strands. These chain or strands, the double coiling of the DNA, the double helical structure, ये सब मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली उसने बताया कि जो डीएनए है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या स्ट्रैंड्स के साथ मिली हुई है दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए हुए हैं एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एंड दे फॉर्म आर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उसके बाद ये जो दो चेन्स है ना ये आपस में हेल्ड हुई हुई हैं इनके दरमियान में वीक बॉन्डिंग है किस चीज़ की हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेयर जो डबल स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में वीक पेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ कवर हुए हैं फिर जो एडेनिन है वो ऑलवेज ऑपोजिट टू थायमिन होगी एज यू कैन सी हेयर ए इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द टी guanine and cytosine are opposite to each other there are two hydrogen bonds between adenine and thymine इनके दरमियान में टू हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे या डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ठीक है between A and T pair and three hydrogen bonds between the G and C pair जी एन सी ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान थ्री पेयर होंगे थ्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होंगी ठीक है
अगर आप ये पिक्चर देखें तो यहाँ पे आपको वॉटसन एंड ग्रीक का ही डीएनए मॉडल नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो बेस पेयर्स हैं उनके स्ट्रक्चर हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऑफ द साइटोसिन, guanine, thymine and adenine. This is the model that is depicting the Watson and Crick model of the DNA. ओके, जो ये वाला टेबल है, इट इज शोइंग अस द अमाउंट ऑफ डीएनए in different type of cells of a chicken and a carp. Carp is basically a type of fish. इनके अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, इसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो हमें ये टेबल बता रहा है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टेबल, राइट? सो सबसे पहले अगर हम देखें चिकन में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 2.3 है। ठीक है, अगर हम लीवर सेल देखें उसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए 2.4 है, किडनी सेल्स में 2.4 है, दीज आर सेम, देन इन द स्पर्म सेल इट्स 1.3, so it is the amount of DNA or the nucleus in the chicken. If we move on towards the carp, a type of fish, here the red blood cell is 3.3, the liver cell and the kidney cell are the same, however the sperm cell is 1.6, right? So this one is an important table that you need to memorize. MCQs do come from it. So ये आपको like अच्छे से याद करना होगा. Do memorize these figures, right? So here come the quiz time. So the first MCQ for today is that dash technique was used to determine the structure of DNA. What was it? The MCQ's options are ECG, X-ray diffraction or refraction. As we have studied that X-rays diffraction technique was used to determine the structure of DNA. Then liver cell of chicken contain dash amount of DNA. The options are 2.3, 2.4 or 2.5. The correct option for this is 2.4. You need to memorize that table in order to answer these MCQs correctly. So this conclude the end of today's lecture. If you guys got any queries, you can ask them below and I'll get back to you. And thank you so much for watching.